आप मतलब स्टैंड अप प्रोफेशनली भी करते हो क्या? तो स्टैंड अप की समझ रहा है? स्टैंड अप नहीं, कॉमेडी नहीं है। नहीं, हाँ ठीक डेली है। स्टैंड अप होता है कंपनीज में, अच्छा। जिसमें हम अपडेट करते हैं। मेरे को नहीं पता था कि तेरे को इसका मतलब नहीं पता है, अच्छा। बट तुम्हें लगा कि तेरे को कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी की बात नहीं कर रहा। तो अच्छा। बेसिकली हर कंपनी में स्टैंड अप मीटिंग्स होती हैं, हाँ। जिसमें वी टेल अपडेट्स की कल क्या किया, आज क्या किया, हाँ। और क्या कहते हैं, थिंग्स विद डिपेंडेंसी या टास्क जिसमें आपको ब्लॉक करे, उनके हाँ। बारे में डिस्कशन होता सो हाय गाइस, दिस इज श्रीश एंड वी हैव ऋतिक भैया विद अस। सो पहले आप इंट्रोड्यूस कर दो यार, फिर हम आगे चलते हैं। है। Okay, so my name is Ritik Harchani, and I'm currently a final year student in Triple IT Allahabad. I'm working as an intern in Blinkit from last year, June, and I'll be joining full time from this July when I graduate. So I've been also been a Google Summer of Code student in 2020, and have been a mentor also last year. So this is it. ग्रेट। तो सबसे पहले भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर पीपीओ। अभी आपको Thank you. फिर से इंटरव्यूज का टेंशन तो नहीं होगा। यू आर सॉर्टेड फॉर द Yeah. ईयर। यप। और अभी हम बेसिकली पूरी जर्नी को डिस्कस कर रहे होंगे अप टू प्लेसमेंट्स। मतलब जब तक आपकी इंटर्नशिप लगी थी तब तक हर एक सेमेस्टर में आपने क्या क्या करा, और कब चीजें आपको पता चली कि अच्छा आपने जी सॉक के लिए अपियर किया, तो कब से वो स्टार्ट हुआ। और थोड़ा सा मैं इस वीडियो के थ्रू ट्रिपल आईटी का कल्चर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक आउटसाइडर्स सुनते हैं वो सिर्फ होता है ईट स्लिप कोड रिपीट ही चलता है ट्रिपल आईटीज में। तो क्या क्या होता है वो हम जान रहे होंगे। ठीक है। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। क्या ट्रिपल आईटीज में भी सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में? सबसे पहले तो ये आप बता दो। हाँ, तो बेसिकली ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में हमारे पास दो ब्रांचेस थी मेरे ईयर में, आईटी और ईसी। और हम्म। हमारे जूनियर ईयर से एक और ब्रांच बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स आ गई, विच हम्म। इज काइंड ऑफ सबसेट ऑफ आईटी ओनली। हम्म। सो फर्स्ट सेम में सबके जो कोर्सेज होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। आईटी पीपल आल्सो हैव टू स्टडी ईसी सब्जेक्ट, एंड ईसी पीपल आल्सो हैव टू स्टडी आईटी सब्जेक्ट्स। ओके, तो ग्रेट। तो मतलब फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा सा एक अपर हैंड मिल जाता है व्हेन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। ठीक है। या ग्रेट। तो फर्स्ट ईयर से ही क्लियर था कि अच्छा मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डीएसए करना है, मतलब जो भी रोड मैप होता है वो फर्स्ट ईयर से ही आपको क्लियर था? आई थिंक व्हेन वी वर इन आवर फर्स्ट ईयर, तो रोड मैप और कंपनीज के बारे में तो इतना सोचते नहीं थे। दिस हम्म। इज बेसिकली आफ्टर पोस्ट कोविड की पीपल आर थिंकिंग फर्स्ट ईयर से ही प्लेसमेंट लगवानी है। वी वर चिल कि हाँ, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा कॉलेज में। तो फर्स्ट सेम में अगर लाइक कोडिंग की बात करें, तो हमारी जो टेक्निकल सोसाइटी है गीक हेवन, दे यूज्ड टू हैव अ सीसी विंग, कॉम्पिटिटिव विंग, दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट इन व्हिच वी टेक पार्ट. हम्म। So in first time, I basically did that competitive programming on Hacker Earth and CodeChef sometimes. So हम्म। thanks to Geek Heaven for pushing us to do. And we had one more course which was named as Introduction to Programming. हम्म। It was in our first sem, so that was a basic course of programming. That's how we learned how to code, and yeah, that's how we got into programming. ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सेमेस्टर ना। दिस वाज अ ओवरव्यू काइंड ऑफ अ थिंग। तो फर्स्ट ईयर में करिकुलर और रेस्ट ऑफ द थिंग्स, सो आपने कैसे मैनेज किया ये सब कुछ, और क्या क्या किया विद रिस्पेक्ट टू योर प्लेसमेंट्स? तो ठीक है, अभी आप सोच नहीं रहे थे, तो क्या क्या पढ़ा बस उतना ही बता दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बेसिकली जैसे बताया कि आईटीपी जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें सी++ सिखाते थे। हम्म। सी सिखाते थे, बेसिकली सी++ हम यूज करते थे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि काफी सारी लाइब्रेरीज वगैरह हैंडी मिल जाती हैं। हम्म। देन जब हमारा विंटर ब्रेक हुआ, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग वर्जन कंट्रोल, व्हिच वाज गेट एंड गिटहब. हम्म। तो एंड गॉट माय लाइक हैंड्स ऑन एंड्रॉइड डेव आल्सो विद जावा. एक्सप्लोर दिस ऐसे ही घूमते घूमते यूडासिटी के कोर्सेज दिख गए थे, तो हम्म। आई स्टार्टेड डूइंग दैट इन विंटर ब्रेक व्हेन वी वर गेटिंग बोर्ड. हम्म। देन सेकंड स्टेम स्टार्ट हुआ, एंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद is having a culture of organizing open code, which is very similar to GSOC. हम्म।
and in this open code we have some projects जो हमारे seniors mentor करते हैं, and we used to contribute in that. So since I got my hands on Android dev, I started exploring Android projects in open code, and got some good experience and mentoring from my seniors also. And then like in second sem, uh, we also participated in some hackathons, and in second semester we also had a data structures course in our curriculum, which was helpful in learning about DSA. And yeah, by the way, I also got attendance back in DSA. I used to not itna focus on attendance, so I thought कि निकल ही जाएगा, but somehow attendance got थोड़ा सा come, and I got a back which I have to clear in summer. Although it was nice experience being in college in summertime. We used to play cricket in common hall, and we used to swim also. We have a swimming pool, but yeah, I got a good GPA also. So it was overall nice experience, and yeah, ठीक है. that तो was it. अगर हम सम अप कर दे फर्स्ट ईयर को, तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली क्लब्स के थ्रू आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपोजर ज्यादा मिला, एंड Yeah, technical side. राइट, एंड आपने एंड्रॉयड एक्सप्लोर किया. Yeah, Android with Java, and we also had मतलब technical society के जो interviews होते हैं उसमें part लेने के लिए, तो I got into technical society, and then after the summer break in first year, after the first year break in summers basically, so we had a project of making a Quora type app. So I was getting mentored from my senior, and I was working on it. And the senior also told me that there's a new technology on Android coming. Basically, it was for mobile apps, which was known as Flutter. It was in 2019. The Flutter was still growing, and he said me basically कि Flutter माल है, explore करना इसको. So I also started exploring in third sem, and then I started exploring Flutter. So my basically initially I used to not focus on documentation. I would like to learn from video courses. So I purchased this course of Angela Hu from Udemy, which costed me around 300 rupees. And this I think till now was also a very good investment, because later on when I participated in Google Summer of Code, my tech stack was Flutter. And we got paid like $3,000 stipend. So if you can see the ROI on return, $300 to $300. So it is 750x. Great. And yeah, this was it. Also, I would like to point out, like video courses might not work for all. It was like currently I find video courses thoda slow paced and boring, but in my second year when I was learning Flutter, I like the course, although it gets thoda sa problematic to complete the course as you don't have itna time. So I took it very slow, and I used to get myself excited on Flutter by talking to people and telling them what I'm learning. मैं मेस में जाता था ना, तो मैं बोलता था कि भाई देखिए फ्लटर है, and with the one source code you can make Android apps, iOS app, desktop apps, and also websites, right? तो although उस समय websites और desktop शायद बीटा में था, आया भी नहीं था, but yeah, we know कि this was into उनके release charts में था. So I used to tell people, not because I wanted to tell them ki ha this is something, but it was because ki I have to get myself excited to complete that course, right? So that was it, that I completed the Flutter course, and I really get good hands on Android development due to Flutter. तो मुझे जो लग रहा है ना कि जनरली एक आजकल तो बहुत सारे YouTube वीडियोस आ जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में वी यू नो गेट थ्रू इट, एंड वी हैव अ सर्टेन कंफ्यूजन कि वेब करे या एंड्रॉइड करे. तो मुझे लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन हुआ ही नहीं, मतलब यू गॉट विद एंड्रॉइड, फिर फ्लटर हुआ, तो मतलब गोइंग विद द फ्लो वाली चीज हो गई थी आपके साथ. तो मतलब यही हुआ था या कंफ्यूजन था आपको भी? Yeah, I think initially सबको confusion होता है, and one should like try both maybe if they have time, or they can explore one also. But होता क्या था कि वेब में अभी बहुत सारे लोग आते हैं, तो एंड्रॉइड में यूजुअली कम लोग रहते हैं, प्लस बहुत लोगों के सिस्टम्स पे एंड्रॉइड स्टूडियो कंपैटिबल नहीं होता है.
तो रिलेटिवली वहाँ पे डेवलपर्स कम रहते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहती हैं. एंड मोर ओवर आई लाइक द एंड्रॉइड बिकॉज आप फोन पे उसको चला सकते हो, टच कर सकते हो, है ना. देन यू कैन शो पीपल एंड like both are good, but also one bias which I had with Android was कि I'm from ICSE board, right? तो हमें 10th में जावा सिखा देते हैं. अच्छा. 9 10 में हमारे कोर्स में जावा होता है. हम्म. तो जावा भी यहाँ यूज हो रही थी एंड्रॉइड डेवलपमेंट में. तो आई स्टार्टेड विद कि हाँ चलो एंड्रॉइड ही स्टार्ट करते हैं. अच्छा. ग्रेट. मतलब कंफ्यूजन का पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो अच्छी बात है वो तो. ग्रेट. हाँ राइट. तो और सेकंड सेमेस्टर में आपने बोला कि डीएसए भी था आपको कोर्स में, जो जनरली कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर में होता है. क्या. ग्रेट. तो तो थर्ड. ट्रिपल आईटीज की बात ये अच्छी है कि हमारे में जो डेटा स्ट्रक्चर्स और आईटी के करिकुलम में वो काफी पहले से स्टार्ट हो जाता है. तो जो लाइक अगर हम बाकी कॉलेजेस की बात करें तो उनमें जो सारे ब्रांचेस के कोर्सेज होते हैं सिमिलर वाले, वो फर्स्ट ईयर तक होते हैं, वो हमारे राइट. फर्स्ट सेम में होते हैं. तो यू गेट अ हेड स्टार्ट बीइंग इन ट्रिपल आईटी. ग्रेट. तो दिस वाज फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर से चलते हैं. थर्ड सेमेस्टर में आपने क्या क्या करा? तो थर्ड सेमेस्टर में मैंने जो हैकाथॉन्स में पार्ट लिया था बेसिकली. तो हमने जो फ्लटर सीखा था उसको यूज में लाया, तो कुछ एप्स बनाए थे. और वी हैड दिस वन प्रोजेक्ट एस्कैप करके व्हिच वी वॉन इन हैकाथॉन अ प्राइज आल्सो. तो एस्कैप वाज बेसिकली अ शेयरिंग कैब ऐप, जो एक कम्युनिटी कैब शेयरिंग सर्विस थी. तो प्रॉब्लम ये थी कि लोग यूजुअली कॉलेज से जब स्टेशन जाते थे या मे बी सिटी में जाते थे तो यूज्ड टू टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स कि if anyone wants to share app, and the like उनका जो वो था channel था that was restricted to batch only. We made this app where you can create a room like PUBG and everybody can send joining request, and then you can chat and travel along with the in the community, like with the batchmates, and other people also from the college. And then this app also had a payment split feature, so you can it was hassle free and you can split the share between the riders. So this was the app that we made in hackathon, and later on we tried to like launch it in our campus. So I plan to launch it before the like when people come back from holy holidays, but that never happened since pandemic came. So we were unable to launch it. Yeah, but I got like really good experience in building this app. We rewrote, like when we took part in hackathon, we created the app in native Android, which was in Java, and then we recreated the whole app in Flutter. So the fast development, the speed decoding, which I got the experience of, helped me in also building a pre-qualification task in my GSA project, and that soon like came along, like उसको कहीं ना कहीं काम आ जाता है अगर आप कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो तो. तो this must have been a resume project for you, right? मतलब सबसे पहला प्रोजेक्ट और काफी अच्छा प्रोजेक्ट हो गया वो. Yeah. Also, like this was based on a real problem, so we were very excited. And then we had our IDC, which is Innovation Hub of our college, which usually give grants to the students pursuing any real world project. So that was fun. Also, I got an opportunity to build an Asmita app. Asmita is basically annual sports events in our college. So the app was pretty simple. We had just the events and organizers data in the app, and we like also integrated push notifications, जिसमें events के समय लोगों को notification आता था कि this event is going on here and you can come there, and they can look the organizers, the prizes, and the events ongoing. So that was a simple app, but since we have created in Flutter, we try to make it as beautiful as possible. And that was something which got live in college. So it was a really good experience when you make something and which is used by people. That was having around 200 downloads, and that was a good project for me. Great. So again, a very early experience on projects, hands-on experience on projects. तो इसके साथ आपने DSA भी कुछ करा था थर्ड सेमेस्टर में, या only projects for now, development part?
Basically, when the college is going offline, so you can't manage everything. So you have to focus on one. Hmm. So I didn't practice DSA when I was in college, but Hmm. when the college went online during the pandemic, then I started practicing on interview bit and lead code. ठीक है, So तो उस not पे in आते हैं college. बाद Yeah. में फिर, ठीक है। तो वो तो फोर्थ Hmm. सेमेस्टर में होगा क्योंकि पैंडेमिक तब से चालू हो गया। Yeah. ठीक है, ओके। और थर्ड सेमेस्टर में डिड यू कवर सम कोर सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, आईटी? Yeah. We had operating system course which हम्म, we did in third semester. ठीक है। तो अभी आता है हमारे फोर्थ सेमेस्टर में। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपने क्या क्या किया, करिकुलर और बाकी कैसे मैनेज किया, क्या क्या किया? So fourth semesters में basically fourth semester partially went online, हम्म। and as you know, online mein we had to less focus on our academic studies. So I focused on participating in GSOC. हम्म। So earlier, like I explored some Java key repositories, हम्म। and basically, yeah, Java and Android with Java. So I was less interested in that, and I thought ki GSOC is not my cup of tea. But then, as the pandemic came, I like one day just looked at the GSOC की website, saw कि उसमें Flutter project भी है. I was very हम्म। excited कि Flutter is something which is my niche, and I have very good base control over that. हम्म। So I just texted my friend to make some designs for me. There was a pre-qualification task basically, since Flutter was a new technology at that time. हम्म। So they don't have a pre-existing repository, right? So selection of students was done on the pre-qualification task. हम्म। So I did make an app in 3 days, and then basically there were 7 people more in the organization who were like working on the same project or writing their proposal on the same project. And हम्म। then out of 7 people, I got selected luckily. And then I GSOC happened, and I participated in it in summer break after second year. तो at the end of your second year you had good projects, you had a fair bit of experience in DSA. तो अब आपने प्लेसमेंट्स के बारे में सोचा था, या अभी कुछ हैकेथॉन्स में वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं? मतलब थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम पे आपका? So thought process था कि हाँ intern का try करते हैं, because one way to get to the placements is via internship EPO, इंटर्नशिप्स। हम्म। or the second thing is directly applying to placements. So first one is a relatively easier thing, because if you are judging a person in just 2-3 hours of interview, हम्म। so your dependency is on that 2-3 hours. But if you are working as an intern for 2 months, so they will judge you on 2 months, right? So continuous effort if you will put, so it's very easy to get a PPO. So therefore I thought of getting an internship. There were few companies which comes on campus. I gave an interview for them, like 1-2 companies, but since I didn't had much hold on DSA, हम्म। uh, like I was rejected, right? हम्म। I remember phone pay was there, and I passed the coding test. I gave an interview, but I got rejected in interview. हम्म। And then yeah, so I took part in hackathon, and basically my focus was to कि हाँ ठीक है, लगती है तो it's okay, नहीं लगती तो फिर placements में देख लेंगे. हम्म। And I participated in hackathons, 1 or 2. And then since I was getting bored, I did one more internship. हम्म। It was a company from one of my alumni, and he हम्म। WhatsApped me कि we need a Flutter developer, and if you can join us, it would be great. I was also getting bored, so I joined that internship in January. I did 3 months, and then Grofers came into our campus on campus interview, and that had like the they shortlisted people basically who had a previous internship experience, right? हम्म। So I was one of the 3 people who got shortlisted. तो फिफ्थ सेमेस्टर तक जीसॉक खत्म हो गया था, फिर डीएसए आपने कर लिया था मोस्टली, काफी बार, अ, और प्रोजेक्ट्स भी आपके पास थे। अभी सिक्स सेमेस्टर में आपने क्या क्या करा? So as I told you, I participated in one internship. हम्म। That was a Flutter developer internship.
Hmm. So I worked on mobile app and learned Flutter in more Hmm. depth. Then Grofers came, so I participated in interview process of Grofers. Hmm. So moving over to the interview process at Grofers, they've given us a take-home task where we were given uh, to make a REST API. It was a CRUD project, Hmm. and the time allotted was like 3 days, and I did that project, made that project, and then there was an interview which happened. So interview for me didn't happen like after some days. The HR reverted to me after 2 weeks. Basically, it was because they have got the openings. They want to take 5 interns, and they got 5 interns, right? Hmm. And then later on, somehow someone saw my project, and I also focused on README and documentation. Hmm. So they liked my project, and then they created a new opening, and then they took my interview. Hmm. So that's how, like, after 2 weeks my interview happened. Hmm. Since this was the role for an intern, there was just one interview of Hmm. 2 hours Hmm. in which they focused on almost like everything. They started with my previous internship experiences, which was one in this Ombre and the other one was in GSOC. Hmm. And then they asked me a DSA question, which was not a hard one. It was a medium one question, Hmm. which can be easily solved using a heap. Hmm. And lastly, they asked me questions on the take-home task which I have done. Hmm. So it was a dev-related question on that take-home task of REST API. And the interviewer just asked me ki, what you will do if we change this, or what you will do, how you will do this, or implement this. So that's how interview went after, and it lasted about 2 hours. And luckily, they got me selected. ग्रेट। तो यार हमने पूरी जर्नी कवर कर ली अप टिल इंटर्नशिप, जब तक इंटर्नशिप नहीं लगती। और 7th और 8th सेमेस्टर में भैया ने बोला कि उन्होंने इंटर्नशिप ही कंटिन्यू करी थी। तो अभी तक यही तक हमारी जर्नी थी भैया के साथ, भैया की जर्नी थी। और बेसिकली ट्रिपल आईटीज और नॉर्मल कॉलेज का डिफरेंस भी हमने थोड़ा बहुत नोटिस किया कि फर्स्ट ईयर में जो चेंजेस होता है उससे काफी अच्छा एक बूस्ट मिल जाता है ट्रिपल आईटीएंस को। और आई गेस इट हेल्प्स इन द लॉन्ग टर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। मतलब मुझे लगता है कि इसी में होने के बावजूद भी आपने कोई ऐसी चीज मिस आउट तो नहीं करी जो कंप्यूटर साइंस वाले करते हैं उससे उनके कंपैरिजन में, राइट? तो आई गेस दिस जर्नी वाज अ वेरी इंसाइटफुल एंड अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। मतलब जो भी लोग स्टार्ट करते बेसिकली, जितने टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज के लोग होते हैं, मोस्टली वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं या कुछ लोग फर्स्ट ईयर से भी स्टार्ट करते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना जो प्लान है शेड्यूल कर सकते हो। आपको ये भी कुछ आइडिया लग गया होगा कि ईयर एंड में जी सॉक के एप्लीकेशंस, एसआईएच के एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं। तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप प्लान कर सकते हो, ठीक है? सो यार दिस वाज इट अबाउट द वीडियो, एंड इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद ऋतिक भैया। काफी ज्यादा इंसाइट्स मिले ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ऋतिक भाई आपका लिंक्डइन का हैंडल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर किसी को क्वेश्चंस होंगे तो आप डीएम कर दो, स्पैम मत कर देना। इतने लोग देखते नहीं है बट ठीक है। और इफ यू हैव लाइक द वीडियो डू कंसिडर हिटिंग द लाइक बटन, सब्सक्राइब भी कर देना फॉर मोर सच वीडियोस, और मेक श्योर यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऋतिक भैया आपको कुछ अगर लास्ट बोलना है तो आप बोल सकते हो। Yeah, so lastly, just apart from tech stuff, I think you could explore other things also. And it's very much important to have good company of friends in your college. So, like, apart from that nerdy friends I had, I also had the people who are very much into fitness and stuff. So Hmm. that helped me explore. Like, I started working out in my second year, and then I did home workouts in my home in during pandemic.
So that was something which I learned in college due to just because the company of friends I have. It's really important to have fun also in college. लगता है इस सीरीज का जो मतलब मेन मोटिव है वो प्लेसमेंट जर्नी को दिखाना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा मतलब बहुत टेक रिलेटेड Tech side. हाँ बातें की. बट भैया ने जैसे बोला कि एक्सप्लोरिंग द कॉलेज जर्नी नॉट ओनली इन अ प्लेसमेंट परस्पेक्टिव मैनर, थोड़ा सा मतलब एंजॉय भी करना चाहिए इस चीज को. मतलब सब लोग करते हैं, बट यस दोनों चीजों का बैलेंस बना के हमें चलना चाहिए. Yep. So, I hope you have liked the video. Again, hit the like button, subscribe, and share with your friends. So, we are done. Thank you so much.